एस्पेक्ट कि कितने टेम्परेचर से कितना रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कितना इंक्रीज होगा, ठीक है. So this quantitative approach was given by Arrhenius. He experimented in a lot of reaction, and by experiments he was able to determine a particular equation that is known as Arrhenius equation. Now, the Arrhenius equation, it gives, please write, gives relationship between temperature and rate constant for a particular reaction. Okay. And the equation is K is equal to A into e to the power minus EA upon RT. Okay. Minus EA upon RT. Now, what are these different terms here? Please see. We have K, that is the rate constant. A is known as Arrhenius or pre-exponential factor. T is temperature. EA is activation energy. R is universal gas constant. Its value is 8.314 per joule, joules per mole per Kelvin. And E is a constant whose value is 2.718. Okay, so please write this down. Raise your hand once you're done writing. Also, guys, can you please have your cameras on? Parker, Sidra, Amna, Alia, Aisha, Khatun, and Rabah. Focus mode is already on. Waiting for Mariam Khatun, Rabah, and Alia. Just waiting for Alia now. Mariam Khatun asking to scroll up. I've just written RNS equation, Mariam Khatun. Alia, are you done? Yes, Alia. Oh, what happened? Alia, am I audible? Hello? No, I don't think so. No. Okay. So I hope everyone has written this down. Now, let us see a question which was asked in the board examination.
Now, this looks difficult, and that is why, I mean, just because it looks difficult, it is of 3 marks. ठीक है, अदरवाइज ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है. हाँ, बस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा that this is asking and this is telling me about the Arrhenius equation. So it says the rate constant for first order decomposition of N2O5 is given by K multiplied by some number, then e to the power something divided by temperature. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes. आलिया, मैं ऑडिबल ना हूँ? आपका माइक काम कर रहा है अब? Yes, Yeah, Alia. yes, sir. Actually, I was transferring this meeting to my PC, so it got hung. So now this is the Arrhenius equation. You just need to compare this with the Arrhenius equation, and then it is asking you to calculate the activation energy for this reaction and the rate constant if its half-life period is 300 minutes. दो अलग अलग सवाल है यहाँ पे. इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा है और उन्होंने आपसे हाफ लाइफ के बारे में पूछा है. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे, इफ आई राइट द Arrhenius equation क्या है? दिस इज द सॉल्यूशन हियर. Arrhenius equation is basically K, that is equal to A into e to the power minus EA upon RT. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल दिस पार्ट इज देयर ना, ये जो फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है A, दिस इज द A, 2.5 into 10 to the power 14 second inverse. Then we have E is also here. Then instead of minus EA upon R, we have this value minus 25000. और T वैसे ही का वैसे ही है यहाँ पे. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. है ना भाई? देखो क्या है सवाल में दिया हुआ, K is equal to 2.5 into 10 to the power 14 second inverse को हम छोड़ दे रहे हैं. Then we have E minus 25000 K divided by temperature. ठीक है. So what I can say that this value minus 25000, this will be equal to minus EA upon R. So I can write minus 25000 will be equal to minus EA upon R. Minus से minus cancel हो जाएगा. Now the EA will be equal to 25000 multiplied by 8.314. Right? This will be in joules, right? Joules per mole. तो आपके पास आंसर जो आएगा जूल्स पर मोल में ही आएगा. यहाँ पे देखिए केल्विन था, वो केल्विन हमने नहीं लिखा, एंड यहाँ पे भी केल्विन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये आंसर वुड बी इन जूल्स पर मोल फॉर एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू देन यू विल गेट, प्लीज मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है. डू इट इन योर नोटबुक गाइस, सॉल्यूशन करके कीजिए. सिद्रा क्या हो गया, आपको फोन गिर गया था क्या? ये सिद्रा? no, sir. You guys please calculate and send the answer in the chat. Okay, I'm just coming in a minute. Okay, send the answer in the chat. Yeah, all of you guys are correct. This will be equal to 207,850 joule per mole, and then you can convert this to kilojoule by just putting up a by putting up a decimal point after 3 digits, है ना? Before 3 digits rather.
207.85085 kilojoule per mole. Then can you guys do this question? Calculate its half-life period. Calculate the rate constant if its half-life period is 300 minutes. Can you guys calculate the rate constant if the half-life is 300 minutes for a first order reaction? First order के लिए half-life है 300 minutes. Calculate the rate constant. And once again I'm saying you can write it in minutes. ठीक है ना? Minute inverse में answer आ जाएगा. Don't worry. You don't have to convert minute to second. Did anyone say the answer? Half-life. Guys, what happened? Half-life. No one. That's really sad. Raise your hand if you know how to do the rate constant from half-life for first order reaction. Mariam Parker knows. Okay, who else? Nobody. पढ़ाई चालू करो भाई, पढ़ाई चालू करो. ओके, आमना यू ऑल्सो नो. ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताइए ना कितना आ रहा है. See here, the rate constant it is equal to 0.693 divided by t half. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको ना कैलकुलेशन में ज्यादा थोड़ा टाइम लग रहा है. तो 0.693 t half is 300 minutes. अब यहाँ पे देखिए 0.693. ठीक है, दिस कैन बी डिवाइड, आप 3 से कर सकते हैं ना, इसको ऐसे कर सकते हैं 3 into 100. ठीक है, 300 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. आपको मिल जाएगा 3 0 point, you'll get this as 0.231 डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो कितना हो गया? 2.31 into 10 to the power minus 3 minute inverse. देखिए, if you understand this part. आमना, आपका तो सही नहीं आया. आमना आ गया, आंसर करेक्ट. व्हाट हैपेंड? आमना कहाँ गलती हो गई? मल्टीप्लाई कर दिया क्या आपने? ये आमना, अरे बोलो तो आमना. Yes, sir. What did you do? You multiplied.
मैंने उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। इसमें सेकंड। अरे यार बोल तो रहे थे सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है भाई। यार प्लीज यार इस बात को समझो यार, सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है कहीं पे भी, ठीक है। ओके सर। केमिस्ट ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में ना सिर्फ एक कन्वर्जन आता है, सिर्फ एक, दैट इज डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। बाकी और कुछ कन्वर्जन नहीं आता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन कन्वर्जन दैट इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, दैट्स इट। और वो जहां जहां हो रहा है डिग्री सेल्सियस आ रहे हैं वहां आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द यूनिट, जस्ट यूज दैट यूनिट कंसिस्टेंटली, बट है ना, दो अलग अलग यूनिट है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। योर आंसर विल बी इन मिनट इनवर्स, ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। Now after this, please write remarks. First point, the pre-exponential factor A and activation energy EA are characteristic of a reaction, यानी एक रिएक्शन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी वही होगा और एक्टिवेशन एनर्जी भी वही होगी, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मीनिंग these are not affected by temperature. Now what does A do? The pre-exponential factor A, it gives an idea about number of effective collision per unit time. Right, next graph for Arrhenius equation. So the Arrhenius equation is K, it is equal to A into e to the power minus EA upon RT. So for this, we'll first of all take log on both sides, natural log on both sides. We will get ln of K is equal to ln of A into e to the power minus EA upon RT. Now, applying the rule of law, rule of log of A into B is equal to log A plus log B. That is ln K will be equal to ln A plus ln e to the power minus EA upon RT. Applying the rule of log A to the power B is equal to B times log A minus EA upon RT can come below. And we will have ln K is equal to ln A minus EA upon RT into log E. Now natural log E, log with base E will be equal to 1 because e to the power E will be equal to, e to the power 1 will be equal to E. So we can eliminate this ln E, it is equal to 1. And we are having the formula ln K is equal to ln A minus E upon 2.303, E upon RT. I can multiply 2.303 and make this ln as log, that is natural log. We will write 2.303
log k. So we are going from natural log to common log, है ना, log with base e to log with base 10. That is equal to 2.303 log a minus ea upon rt. We can multiply 2.303, sorry, not multiply, rather divide 2.303 along the whole equation, and we will get 2.303 divided by 2.303 will be equal to 2.303 divided by 2.303, and minus here, so here also we will multiply 2.303, and divide with 2.303. We are dividing with one number in the whole equation. So this will getting cancelled, this will be getting cancelled, and you will get the equation log of k is equal to log of a minus ea upon 2.303 rt. ठीक है. So why are we dividing with by? ओ कुछ ये नहीं है इसका, ऐसा मतलब खास रीजन नहीं है, जस्ट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. दो बार 2.303 आ रहा था ना ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, बोथ ऑफ द साइड वी वर हैविंग, उसी वजह से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया बस. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर हैविंग. प्लीज राइट दिस डाउन. दिस इज द इक्वेशन ऑन विच वी हैव टू मेक द ग्राफ. इसको प्लीज लिख लीजिए जरा. ये इक्वेशन है, एंड द एल एन काउंटर पार्ट ऑफ इट है ना, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है, दैट ऑल्सो, विच इज ln k is equal to ln a minus ea upon rt. वहां पे 2.303 वाला पार्ट नहीं रहेगा बस, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. So these are the two graph, these are the two equations for which we have to make the graph. The graphs will be very similar. Please write this down, raise your hand once you're done. Scroll up. Who is remaining? Aisha and Rabah, please raise your hand. Aisha and Rabah, raise your hand if you're done. Rabah, waiting for you. Rabah, what happened? You're still writing? Yes, sir. This is the last line. अच्छा अच्छा, ठीक. क्लियर केस. ठीक है. जो ग्राफ है हमारे पास या फिर जो प्लॉट है, दैट
दो हम लोग प्लॉट पढ़ेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट log a, my bad guys, why log a, log k, log k, or we can take ln k versus 1 by t. एक बार 1 by t के अगेंस्ट में क्या विल बी पुटिंग log k, and 1 by t के अगेंस्ट विल बी पुटिंग ln k. ठीक है. Both the graphs will be having very similar shape, but the parameters such as the slope of the graph will be different and the intercept will be different. Otherwise shape will be almost same. ठीक है. दोनों ग्राफ का ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम रहेगा. Now please see, if I look at the equation, this is my 1 by t, and here I am having log k. ठीक है. और ln k और log k, any one of them you can have. अब देखिए इन log k this is your y. ठीक है. 1 by t, this whole thing, it is your x. Then you will be having minus ea upon 2.303 as the slope, which is m, and log a will be the intercept, right, the c. So intercept is positive, so we'll on the y axis we will start the graph from the positive side. पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया. अब बताइए स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टेल मी अबाउट द स्लोप. एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. तो डाउनवर्ड स्लोप मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. है ना भाई? ठीक है. सो सी हियर गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज आइदर ln a or log a, depending on what graph you are taking. Does this make sense? Yes or no, please tell me guys. अगर ln k वर्सेस 1 by t ले रहे हैं तो ln a हो जाएगा, है ना. देखिए दिस इज द c. हाँ या ना बोल दे भाई, हमको समझ में आ जाए कि आप लोग को आ गया. टेल मी, गॉट इट ना? सिमिलरली दिस विल बी स्लोप. अब स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप दो हो सकता है आपके पास. इफ यू आर टेकिंग ln k माइनस वर्सेस 1 by t, देन द स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस ea by 2 point, sorry not 2 point, minus ea by r. If you are taking the other graph, that is log a वाला ग्राफ, then वहां पे क्या हो जाएगा? It will be minus ea upon 2.303 r. ठीक है. So these are the two different plots that we will be getting. Does this make sense? Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. For ln k versus 1 by t, and this will be for log k versus 1 by t. Copy this down, raise your hand once you're done.
Who else is writing? Parker and Rabah waiting for you guys. ये अभी एक सवाल लिखिए आसान से। देखिए हम ये बस बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कोई भी चीज ना मतलब ऐसे ही नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज आस्क्ड इन द पेपर 2018 के बाद की ये सारे सवाल है ना, आफ्टर 2018 जब एमसीक्यू वगैरह आने लगा था ना, उस टाइप की बातें। इनिशियली एमसीक्यूज नहीं आते थे इतने, धीरे धीरे एमसीक्यू का कंटेंट बढ़ गया। चलिए टेल मी द आंसर, एबीसीडी क्या होगा? Okay, Parker, send your answers in chat, guys. Okay, Aisha. Okay, आमना। बहुत सारे लोगों का अभी भी आंसर नहीं आया है। यस सित्रा करेक्ट। आलिया आपका आंसर नहीं आया है। रबा यू हैव नॉट आंसर्ड। यस आलिया करेक्ट। सिद्रा आंसर आ गया, ठीक है। मरियम, आयशा, आमना, आमना, आलिया एंड सिद्रा। नो मरियम खातून, थोड़ी गड़बड़ कर दिया आपने। रबा सही है। सी एल के वर्सेस 1/t ना। देखिए द इंटरसेप्ट इज गोइंग टू बी ln a और स्लोप होगा -e/r ना। मरियम खातून कैसे गलती कर दिया आपने? -e/r सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। देखिए पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। ये ई जो है दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब उसके बाद ये इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ठीक हो सकता है। एंड देन ये अगर इफ दिस एक्सिस इज हैविंग ln, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी ना तो उसमें ln की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ यही वाला सही हो सकता है, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द ग्राफ इटसेल्फ, अगर आपको नहीं कुछ पता, देखिए यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, तब भी आप आंसर यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट द ग्राफ। सबसे पहले तो आप बोलिएगा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना, बिकॉज डाउनवर्ड जा रहा है ना। एज वी आर इंक्रीजिंग द वाई, द एक्स इज डिक्रीजिंग, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, सी और डी। नाउ इन द डी ऑप्शन इफ यू सी द इंटरसेप्ट, ये क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट ए होगा। बट वाई एक्सिस की यूनिट में ही क्या आ रहा है, एल एन आ रहा है ना। तो वाई एक्सिस की यूनिट में अगर एल एन ही आ रहा है तो एल एन तो यहाँ पे होगा ही, तो इट विल बी नॉट ए, इट विल बी रादर कोई भी चीज ऐसी होगी जिसमें एल एन लगा हो। सो फ्रॉम नेगेटिव साइन यू कैन आइडेंटिफाई दैट स्लोप इज नेगेटिव। और एल एन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज दिस वाई एक्सिस इज वॉट एल एन, मतलब जहां पे जो भी वैल्यूज होगी ना इट विल बी हैविंग द एल एन पार्ट, लॉग की वैल्यूज आ रही है, दैट इज वाई द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन। राइट, Arrhenius equation at two different temperatures. Arrhenius equation at two different temperature. देखिए एक जनरल चीज है जिसके बारे में एक बार सवाल आ गया था, दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उसको जरा लिख लीजिए। ऑन एवरी
10 degree Celsius or 10 Kelvin rise in temperature, the rate of reaction, या फिर आप रेट कांस्टेंट बोल लीजिए, एक ही चीज है. रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद बढ़ जाएगा. रेट कांस्टेंट डबल्स. ठीक है, तो ये अगर एमसीक्यू वगैरह में आ गया ना, तो यहाँ पे आप डबल लिख दीजिएगा. बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस एज व्हाट, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस इन न्यूमेरिकल्स. थ्योरेटिकल सवाल आ गया ना, दैट एट व्हाट शुड बी द राइज इन टेम्परेचर टू डबल द रेट कांस्टेंट, तो 10 डिग्री 10 केल्विन आप लोग ऐसे लिखिएगा. नाउ व्हेन वी हैव टू डील विद न्यूमेरिकल्स, then you will say that at T1 and T2 टेम्परेचर है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं. T1 और T2 में फॉर अ रिएक्शन एट T1 and T2 फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, for a reaction, we are not going to change the reaction, we are not going to change the reaction. If you are not going to change the reaction, we are only changing the temperature, then we can say that the rate constant is going to change. So you will have log of K1 will be equal to log of A for both the temperature, because A is constant for a reaction. We have just seen that minus EA upon 2.303 R into T1. We have also seen that activation energy is characteristic of a reaction. It does not change with temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर T1 रख लीजिए, T2 रख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज होगा. 2.303 is a constant and R is also constant. So this is at temperature T1. At temperature T2, we can write log of K2 will be equal to log of A minus EA upon 2.303 R into T2. ठीक है, this is equation number 1 and this is equation number 2. Now if we subtract 2 from 1, we do 2 minus 1, then we can write log of K2 minus log of K1 is equal to log A minus EA upon 2.303 R of T2 minus log A. अब देखिए ये ब्रैकेट दे देंगे हम ना, बिकॉज 2 minus 1, इसके बाहर माइनस साइन लगेगा, एंड इसके बाहर रखिएगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर. ठीक है ना, माइनस लॉग इंटू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 303 R T1. Now please see log K2 upon log K2 in minus log K1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, by the quotient rule, log K2 upon K1 will be equal to log A minus EA upon 2.303 R of T2 minus log A plus EA upon 2.303 R of T1. Log A and minus log A will cancel each other. You'll have log of K2 upon K1 will be equal to positive sign वाला इधर है, EA upon 2.303 R of T1 minus EA upon 2.303 R into T2. Up from here we can take a few things common. K2 upon K1 is equal to EA common हो गया, divided by 2.303 R common हो गया, 1 upon T1 minus 1 upon T2. Now if you take the LCM, you'll get the formula log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 into T2. चलिए प्लीज छापिए जरा. I understand that derivation is long, but ये आपको मतलब करना ही पड़ेगा, and you have to remember this particular formula also. ठीक है, सवाल आते हैं. ठीक है, अब देखिए इन सब चीजों को छोड़ के मत जाइएगा, 3-3 नंबर का सवाल आ जाता है सीधा इससे. ठीक है,
स्क्रॉल अप, पार्कर कितना, सॉरी मरियम, पार्कर ओनली, पार्कर आप ये सारी चीजें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, नहीं? हाँ पार्कर टेल मी। Yes, sir. Actually, your voice was lagging. My Wi-Fi was lagging that time. अच्छा अच्छा ठीक, नो प्रॉब्लम। सम पीपल आर डन। मरियम खातून ने ना लिया, इधर से डन, ठीक है। चलिए बाकी लोग भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए। Waiting for Aisha, Mariam Khatun, and Parker. We are just waiting for Rabah now. Rabah, you will raise the hand once you're done writing. Rabah, कितना बाकी है? Yes, Rabah, are you done? No. There's just lots of box. अच्छा अच्छा ठीक है। इस, oh sorry, if you have not written it, my bad. Write this question and then we will look at it. So the question says that the rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate the activation energy. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करें, when temperature increases from dash to dash, बताइए from where to where, बोलो भाई, from where to where, ये सिद्रा, टेम्परेचर कहां से कहां लेके जाना है, बोलो भाई, अरे रे रे इतना टाइम लगना चाहिए, स्पीक अप गाइस। T1 to T2. सॉरी 10 to 298. हाँ 298 is 10. 298 से कहां तक, 10. हाउ इट इज इंक्रीज देन, देखिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 के, 10 केल्विन इंक्रीज करना है ना, you have to increase 10 Kelvin. So 298 plus 10 will be 39, will be, oh, not 392, my bad, 308. Does this make sense? Tell me guys, ऐसा नहीं कि केल्विन केल्विन देख लिया तो इंक्रीज और डिक्रीज K2 T1 T2 ले लिया, ठीक है, you have to read it correctly। अरे बोलो हाँ या ना, 298 टू, अरे बोलो भाई, Yes, sir. है ना, 308, then what happens, then the rate of the chemical reaction doubles। We know that the increase in temperature is going to affect the rate constant, ठीक है, and by the virtue of that the rate will increase। rate directly increase नहीं करेगा, but rather the rate constant, so we can say that when is इतना तो इतना, then the rate constant doubles।
सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सी हियर वी हैव दिस इक्वेशन फॉर T1 एंड T2 ना, तो इसको लिख लीजिए log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन, अब देखिए इसके भी ना हम आपको वैल्यू बता देते हैं, 2.303 into R, that is 8.314, इसकी वैल्यू आती है 19.14. ओके, सो यू रिमेंबर दिस वैल्यू एज द प्रोडक्ट ऑफ E 2.303 and R into T2 minus T1 divided by T1 into T2. अब यहाँ पे आप व्हाट यू कैन डू, लेट अस सपोज कि T1 है आपका 298 एंड T2 है आपके पास 308. ओके, सो एट T1 लेट अस सपोज द रेट कांस्टेंट इज K, तो T2 पे कितना हो जाएगा, डबल 2K. सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज नाउ, K इज इक्वल टू व्हाट, द K1, और 2K क्या है आपके पास, दिस इज K2. ठीक है, सो वी कैन राइट log ऑफ 2K डिवाइड बाई K is equal to EA upon 19.14 multiplied by T2 minus T1 divided by T1 into T2. अरे सॉरी माय बैड, T2 T1 को भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना. सो T2 minus T1 तो 10 हो जाएगा, बिकॉज T2 is 298 multiplied, sorry not multiplied, minus 308. This will be divided by 298, थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने गाइस, माय बैड, 308 पहले होगा, minus 298, 298 into 308. Okay, so you will get some simplification, K and K will cancel, you will get this as log 2 is equal to EA upon 19.14 into 10 upon 298 into 308. ठीक है, सो आपके पास EA जो आएगा, EA will be equal to log 2 की वैल्यू होती है कितनी, 0.3 multiplied by 19.14 multiplied by 298 into 308 divided by 10. ठीक है, तो कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर. I hope this calculation makes sense, the simplification till the last step. Some doubt, can you explain how did we get 308? Amna, can you please turn your mic on? Yes, sir. पढ़िए जरा, the rate of chemical reaction, पढ़िए. The rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 K in absolute temperature from 298 K. Calculate. केल्विन हाँ, फ्रॉम, बताइए 10 केल्विन इंक्रीज करना है ना, Yes, sir. कहाँ से, From 298. तो 298 में ऐड कर दें 10, है ना. Yes, sir. नाउ दिस सेंटेंस मेक सेंस. Yes, sir. ठीक है,
Sidra, it was not actually 2.303. It was 2.303 multiplied by R. So 2.303 multiplied by 8.314, it is equal to 19.14, something, something, but this is the value. Got it, Sidra? Hmm. No, you're not getting the right answer, Mariam Khatun. Aisha, your answer is a bit closer. Mariam Khatun, there is some big mistake in your calculation. Please check it. Mariam Khatun, now it is correct. Now it is correct. Yeah, earlier that also works. किसका सही है लेकिन मतलब थोड़ा सा फर्क है आई मीन अप्रोक्सीमेशंस में दोनों का सही हो जाएगा ओ ओ देयर आर टू आंसर्स वी आर गेटिंग ऐसा क्यों हो रहा है भाई अच्छा आई थिंक इफ यू आर टेकिंग log 2 तो कुछ अलग आंसर आ रहा होगा थोड़ा सा आई गेस लेट अस सी log 2 multiplied by 19.4 multiplied by 2 multiplied by 298 multiplied by 308. It is 536. Okay. My bad, guys. My bad. एक second. 19.14, yeah, 4. I forgot this value. Sorry, by 8.314 is 19.14, guys. My bad. यहाँ पे हमने गलती से 4 लिख दिया. ठीक है. ऊपर हम सही लिखते आ रहे थे. It is 19.14. My bad. My bad. और फिर से हम 1 भूल जा रहे थे. 14. Yeah, I said it is 19.14. So the answer would be 52702, I guess, because वो मेरा mistake था, वही carry forward हो गया आप लोग तक. 52702.37. The value will be joules per mole. You can convert this to kilojoule as 1, 2, 3. 3 places, so 52.702 kilojoule per mole. ठीक है. Now, after this, write the last topic of this chapter. Raise your hand once you're done. Just give me a second. सॉरी मरियम खातून दिस वाज द मिस्टेक 19.14 ना वो 19.4 लिख दिया था हमने गॉट इट मरियम खातून Yes, sir.
चलिए right, next rate expression for reaction involving gases only. ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस तरह के रिएक्शंस को. अगर सवाल आ गया ना तो मतलब डायरेक्टली यू कैन नॉट यूज द कंसंट्रेशन when they have given you the pressure. So first of all you have A, which is a gas. Let us suppose it is going to give you B, which is a gas, and C, which is a gas. So first of all, पहली चीज तो ये that this question will be asked only for first order reactions. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही वो लोग पूछेंगे. And since you can see we have only one reactant here, so let us see how the reaction goes when we have gases only. So to understand the progress of a reaction, we make a ICE table. So ICE basically initial, the change, and after the change what happens, we call it equilibrium, है ना. When the reaction is completed, तब equilibrium आ जाता है, and that is equilibrium. ठीक है, so ICE table बनाते हैं, ICE. So initial, we will say that we have P initial. ठीक है, जो initial pressure होगा in the system, if I am having this particular reaction occurring in a box, and when I have just added A, तो जो initially हम pressure लेंगे वो क्या हो जाएगा, P initial, and that will be only because of A. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. ठीक है, अरे बोलो भाई. नहीं, ओहो इतना टाइम लगाएंगे. इनिशियली जो प्रेशर होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट ना. यस और नो? Yes, नहीं आ sir. रहा समझ में? पक्का आ रहा समझ में सबको? ध्यान है ना सबका कि नहीं ध्यान है? ध्यान है, ठीक है. सी है, अब जो बी होगा, दैट विल बी जीरो. It will be 0 and C will also be 0. Now let us suppose that while the reaction is occurring, some amount of A reacts. It will be minus X, और जितना A react करेगा उतना B बनेगा, और उतना ही क्या बनेगा, C बनेगा. So at equilibrium we can say that what is happening, we have P initial minus some amount of A that has reacted, उतना बचा रहेगा equilibrium में. What amount of B will be available, X amount of B will be available, and X amount of C will be available. Does this make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में जब सारा रिएक्शन हो चुका है, सो दिस होल, ये सारा का सारा प्रेशर है ना, दिस इज सम प्रेशर, दिस इज सम प्रेशर, दिस इज सम प्रेशर. सो दिस विल बी द टोटल प्रेशर आखिरी में, बिल्कुल जो पी टोटल होगा. सो व्हाट वी कैन से दैट पी टोटल विल बी इक्वल टू, आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, जब सारा रिएक्शन हो चुका है, द प्रेशर ड्यू टू ए प्लस द प्रेशर ड्यू टू बी प्लस द प्रेशर ड्यू टू सी. इनिशियली तो सिर्फ ए था, दैट इज व्हाई वी टुक ओनली प्रेशर ड्यू टू ए. Now what is the pressure due to A at equilibrium? Total जो है हमारा आखिरी में कितना है बताइए जरा. What is the pressure due to A at the Pi minus X. initial pressure minus X. Due to B, it is how much? X. Plus X. And due to C, it is also X. So the P total will be equal to P initial plus X, है ना. Does this make sense? Yes or no? अब ध्यान से सुनिए जरा. Yes, sir. जब आपने A डाला तब आपको क्या मिल गया, P इनिशियल मिल गया. जब A ने रिएक्शन कर लिया, when A has all reacted and everything, उसको B और C सब कुछ हो गया, then what pressure you will get? It will be the P total. So you can see that P initial can be measured, P total can also be measured. Correct है guys? सुनो please tell me. है ना, सही है. P initial can also be measured, P total can also be measured. What cannot be measured is the X. आप ये पता नहीं लगा सकते कि कितना रिएक्ट किया गया. That is why what I will do, I will rearrange this in the format of X. कि X की वैल्यू क्या होगी, the amount of A that has reacted will be equal to how much? It will be equal to, tell me, P total minus P initial. Does this make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. ठीक है, अब we are going to apply this all thing to the first order equation.
हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है दैट इज KT अपॉन 2.303 which is equal to log of A naught डिवाइड बाई log of A. ठीक है, अब इसी चीज को चेंज करके अगर आप देखें तो KT तो KT रहेगा, डिवाइड बाई 2.303 will be 2.303 log of which will be equal to log of A naught, that will be the initial pressure of the system, divided by the remaining of A. A कितना बचा है? A कितना बचा है? A बचा है P minus X, Pi minus X, the remaining amount of A. Now we all know that Pi minus X कितना हो जाएगा? Pi minus X, X कितना होता है? P total, है ना? Pi minus P total, देखिएगा Pi minus P total minus Pi, ठीक है, तो हो जाएगा Pi minus P total और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस Pi. तो Pi प्लस Pi कितना हो गया? 2Pi minus P total. So I can write this as KT upon 2.303 is equal to log of the initial pressure divided by 2 times the initial pressure minus the total pressure. Now this is the equation that we can use for the first order reaction involving only gaseous atom. Okay, please copy this down, raise your hand once you're done. Waiting for Alia, Amna, and Sitra. Fine. All of you guys are done. So let's see a question. Okay, so when you see all of them are in gaseous state, and they have also given you the
प्रेशर, तो यहाँ पे आप लोग कुछ चीजें निकालिएगा। द पी इनिशियल कितना होगा चार्ट में बताइएगा। व्हाट विल बी द पी इनिशियल? टेल मी इन द चैट गाइस, व्हाट विल बी द पी इनिशियल? Yes, Alia, correct. Waiting for 2, 3 more answers. Yes, Parker, correct. Amna, correct. Yeah, very good. That will be 0.518, right? 0.518. And then P total. What is the P total, guys? That after the reaction, after 10 seconds, the pressure was found to be. P total कितना हो? जब सारा रिएक्शन हो जाएगा तब P total बोलते हैं ना, तब कितना हो जाएगा? Yeah, correct. 0.6. Very good. ठीक है, 0.6. And what is the time? Time is equal to 10 seconds. So you will apply KT upon 2.303 is equal to log of P initial divided by 2 times of P initial minus P total. Plug in the form, plug in the values, you will get the answer. Log वाला अगर कहीं लोचा आया तो फिर बताइएगा, I will tell the log value. जहां तक हो सकता है कीजिए. I will give you guys what, 3 minutes. 3 minutes would be enough. Okay, पार्कर ऐसा लग रहा है आपका. फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन. आई थिंक यू विल बी गेटिंग समथिंग इन द फ्रैक्शन मरीन पार्कर. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्कर डेसिमल में भी नहीं आएगा. आई नो. I don't think so. Yeah, it won't be like that. 2 into pi minus p total. नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है पार्कर. लॉग में कुछ तो गलत हो रहा है. पी इनिशियली आपने गलत लिखा है पार्कर. यार माइक ऑन करिएगा प्लीज. पार्कर, टर्न योर माइक ऑन. यस पार्कर, Yes, मैं sir. ऑडिबल? हाँ बताइए कैसे हो किया आपने. व्हाट इज पीआई? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीआई? 0.5. Yes, sir. I wrote it 0.6. I तो realized. ठीक है. हाँ ठीक है. Try to simplify it in fractions and the numerator and denominator should be as whole numbers. फिर आपके लिए आसान हो जाएगा. Guys, send me whatever you have done till now.
Sidra is not the answer. अरे नहीं यार, Harappa, no, that's wrong. Sidra, no, that's not right. यार रेट कांस्टेंट निकालना ना, तो इतना ज्यादा. सेंड योर आंसर व्हाटएवर यू हैव डन इन माय व्हाट्सएप यार, व्हाट्सएप में भेजिए प्लीज. k will be equal to 2.303 divided by 10 log of pi 0.5 divided by 2 times of pi will be 1 minus p total will be minus 0.6. Okay, send your answers ना. अच्छा ठीक है, किसी ने भेजा है. Amna has sent 1.25. log 1.25 कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप? आमना, log 1.25 कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप? टेल मी. सिद्रा, फिर लेकिन log 1.25 कैसे कैलकुलेट किया? log 1.25 बताइए जरा, आमना एंड सिद्रा. अरे भाई, के निकालना यार, ये ना बच्चों जैसी हरकत ना करें आप लोग, ठीक है ना? कुछ लोगों ने जो यहाँ पे ना केटी को ऐसे ही रख दिया है. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, तो ये भी तो हम नहीं बताएंगे ना कि 2.303 को उधर रखना है, फिर टी को नीचे रखना है ना? पूरा सवाल आप लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं कि सिर्फ लॉग की वैल्यू को चेंज करना है. सी हियर गाइस, बड़ी दुविधा है भाई. 2.303 डिवाइड बाई 10 है ना? लॉग ऑफ 0.5 को 0.5 लिख दिया, डिवाइड बाई 1 माइनस 0.6 को क्या लिख दिया? 0.4. अब इस फ्रैक्शन में ध्यान से देखना भाई, ध्यान से. सी ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज सी वेरी केयरफुली. If I multiply 10 in the numerator and 10 in the denominator, is there any difference? Will it make any difference? Tell me guys, yes or no? If I multiply, no ना. तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यही है कि आई एम रिमूविंग द डेसिमल. यही हुआ ना मतलब? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब सुनिए जरा. दिस विल बी इक्वल टू, इसको ले लो 0.2303. नाउ वी हैव लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग 4. ऐसे किया जाता है. लॉग 1.25 कौन आगे बताने वाला है आपको? 0.2303. लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है गाइस? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट्स लॉग 5? 0.7. कुछ नहीं भाई यार, 0.7 माइनस log 4 is 0.6. This will be equal to 0.2303 multiplied by 0.1, which will be equal to 0.02303. ठीक है, and since it is second inverse, what will be the unit guys? Tell me. Unit क्या हो जाएगा बोलो? 8. What would be the unit? Mole 8. आवाज ही नहीं है, क्या बोला आपने? नो आइडिया व्हाट विद. अरे, तब तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया क्या? The unit of rate constant when we are having first order. First order में क्या होता है? Per second. Per Second second. inverse. Per second. Write this down. Raise your hand once you're done.
बताइए गाइस, अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? हम्म अच्छा, ऑर्गेनिक बताइए तो किसने नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक इन द चैट। मोल पर लीटर पार कर सेकंड इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर कार्य भाई। मार लगती है, आप मेरे सामने रहते तो आप मोल पर लीटर जो कर रहे हैं सेकंड इनवर्स होता है, याद कर लो, रटो रटो इन सब चीजों को, ठीक है ना? अब आपके पास कुछ महीने बचे हैं, रटना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? कुछ चीजें हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट विल बी द यूनिट सेकंड इनवर्स। डिराइव किया जा सकता है भाई, डिराइव करने में लेकिन टाइम जाता है ना, रट लो उतने टाइम के अंदर। दिस रिजल्ट इज ओनली व्हाट, ये रिजल्ट काम आने वाला है। ओ हाँ, बाय द वे हमको एक बात याद आई, हमने एक सवाल दिया था आप लोग को लास्ट टेस्ट में। सवाल ऐसा था कुछ कि डिराइव दी, सवाल दिया था ये वाला, आप ही लोग का था ना, एक बार देखने दीजिए हमको जरा। ऐसे ही मेरा थोड़ा सा गोल्डफिश का ब्रेन है, याद नहीं रहता वो चीज। C3, ये 17 नवंबर को जो टेस्ट है ना, उसमें नहीं, थर्ड वाले में, 3 नवंबर को। हाँ, डिराइव द यूनिट ऑफ, ये दिया था हमने सवाल। पेपर मिले आप लोग को? बोले तो भाई, एक तो ना तुम लोग हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? माइक ऑन ही नहीं हो रहा है किसी का। पेपर दिया था आप लोगों ने? आलिया ने नहीं यस दिया था? दिया था ना, ये देखो, ये था ना, डिराइव द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। डिराइव द यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करना था, कैसे करते हैं? ये देखिए, आप लोगों का यार कराया हुआ चीज सब आप लोग बिल्कुल ऐसे, दूसरा ना, नोट्स पढ़ा करो, ठीक है? और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना, फिर क्वेश्चन पेपर को नोट से टैली किया करो। बुक अगर से कर रहे हैं आप ना, इफ यू आर टैलिंग विद द बुक, बुक से टैली करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये करना था आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1। के इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट की यूनिट लिखा, कंसंट्रेशन की यूनिट लिखा, के इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। डस दिस मेक सेंस? बोलिए गाइस, ठीक है? आप लोगों ने कुछ और किया था, आप लोग जानते क्या कर दिया था? इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ वाला कर दिया था, है ना? सही Yes, कह रहे sir. हैं हम? सॉरी, एक एक बच्चा बोले भाई, एक बच्चा बोले। कौन बोला था? तो मरीम खातून, आपने वही किया था, तो सही किया होगा फिर आपने। लेकिन कुछ लोगों ने किया था ये वाला, देखें खातून, हमको पता नहीं सही क्या था आपने। लेट मी सी। लो लो लर्निंग टेस्ट 2023 एंड 3 नवंबर ना? 3 नवंबर। मरियम, मरियम खातून, हाँ तभी तो आपको अच्छे नंबर आए हैं ना। आपने नहीं किया था वो? नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, आपने किया था, आपने कुछ और में गलत आंसर कर दिया था आपने, हाँ पहला वाला जो सवाल है उसमें गलत किया था। सॉरी मरियम, आपने वो, हाँ, एक्सप्लेन द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपने गलत लिखा है। यू हैव एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना मरियम खातून? हाँ, वो आपने गलत कर दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब बात है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, दैट इज रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बस एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑर्डर से आपको उसका लेना देना नहीं था, आपने ना उसको फर्स्ट ऑर्डर से घुसा के लिख दिया, दैट इज वाई इट इज नॉट, है ना? आई थिंक आई हैव कमेंटेड ऑन दैट आल्सो। और किसने किया था? और 12C3 में राबिया थी, राबिया आज आई नहीं है। 2 बच्चों ने सिर्फ टेस्ट दिया था, और तो किसी ने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था? आयशा, आलिया ने दिया था, आयशा पार्कर ने भी नहीं दिया था। भाई टेस्ट देना चालू करो यार अब, ठीक है? चलिए, अच्छा टेल मी गाइस व्हाट चैप्टर्स टू, अच्छा हाँ, रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट डन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ मी।
I'm saying this once again. Raise your hand if you have not done organic chemistry with me. Amna and Sidra. ठीक है, आमना एंड सिद्रा, नोट दिस टाइमिंग. उनको ध्यान नहीं रहा, थोड़ा आप लोग को और पहले बुलाते. सैटरडे एंड संडे, 6:30 PM to 8 PM IST. ओके, आमना एंड सिद्रा. सिद्रा आपका भी तो नहीं हुआ होगा ना, अभी तो लेट आए थे. Sir, हम्म. for me, just chemistry. एक सेकंड रब्बा. हाँ, आमना एंड सिद्रा, टेल मी व्हाट हैपेंड. We had physics class during this time. अच्छा, बट आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस टाइम को, है ना. अगर बाद में मान लीजिए आप, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए. हाँ रबा, आप बताइए. मेरा अमाइंस रहता है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अमाइंस तो सबका रह रहा है, अमाइंस वो रह रहा है, ठीक, नो प्रॉब्लम. अमाइंस इसी इस बैच में हो जाएगा. अमाइंस और डी ब्लॉक. अच्छा, अमीन से स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं बच्चे, या फिर डीएनएफ ब्लॉक. क्यों, कोऑर्डिनेशन हो गया क्या? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन के बाद ही डीएनएफ होगा रे भाई. जो बच्चे चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन करते हैं स्टार्ट. टेल मी गाइस व्हाट हैपेंड. शुड वी स्टार्ट कोऑर्डिनेशन? रेज योर हैंड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन दिस बैच. ठीक है, मैक्सिमम लोगों का हैंड्स अप और सब कुछ आ गया. ठीक है, कोऑर्डिनेशन. ओके, सो ऑन वेंसडे वी विल बी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फाइन. अच्छा, जिन लोगों को भी हैलो एल्किन हैलोरीन केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह रिवाइज करनी है, दिस इज द टाइमिंग. सैटरडे संडे 6:30 to 8 PM IST. ठीक है, दैट विल बी 4 PM to 5:30 KSA. ठीक है, दोज हु वांट टू